Association, IPEMA, took the initiative to create a platform dedicated to showcasing the strength, innovation of not only Indian poultry equipment manufacturers but also the other poultry sector manufacturers. Also, the other poultry related manufacturers like feed additives, vaccines, medicines, breed, and all the connected activities. Our goal was clear to promote indigenous products, to give our manufacturers a stage to display their technology, and to ultimately benefit India's marginal and small poultry farmers. The initiative was well supported by all major poultry associations of India like NACC, CLAPMA, Poultry Federation of India, and all the major stakeholders of the poultry sector. What began humbly with just one hall of 3,500 square meters today has grown into a truly world class event, now spread over 7 halls covering more than 35,000 square meters area. This growth is a reflection of the confidence and collaboration within our poultry community and the trust shown by the exhibitors and visitors year after year. We are proud to share that this exhibition is the biggest exhibition for poultry in world. Other international exhibitions are mostly combining poultry, fishery, cattle, pig farming, everything. Our industry show, Poultry India, is only about chicken. We also recognized early that the poultry sector thrives on innovation and global cooperation. That is why, along with Indian manufacturers, we have always welcomed international participants, enabling valuable exchange of ideas, technologies, and best poultry practices. Our choice of Hyderabad as a venue was deliberate and strategic. Hyderabad is widely known as the poultry capital of India. The states of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra, and Tamil Nadu together contribute over 70% of the India's total egg and chicken production, making it the heart of nation's poultry economy. The Poultry India exhibition is organized by IPEMA, which is a non-profit organization driven purely by commitment to the sector rather than the commercial interest. Our aim remains the same as it was in 2007 to strengthen the Indian poultry industry, empower our farmers, and project India as a global leader in poultry production and technology. I am very happy to mention that all the poultry related associations are taking active interest in this vision, and this is also well supported by Department of Animal Husbandry, Government of India. I thank all our partners, our exhibitors, and media friends for supporting this vision and making Poultry India exhibition a symbol of excellence, innovation, collaboration in the poultry world. Sincere request to all media to please give wide coverage to this yearly event with vision to promote Make in India mantra and to increase trade with many countries in poultry sector. I request Mr. Suresh, thank you, sir, Anilji. I request Suresh Chituri, sir, to give because I think he has a flight to go. He's specially come from Hyderabad on a request. And, sir, I would first take your suggestion on then we can move. Thank you, Uday. So बचपन से we were always going to the Atlanta show to see what is happening in poultry. And I have to say now, it's been now 3 or 4 years since I've gone to Atlanta show because I see no need to go there because of Poultry India.
This is our 17th year. Atlanta show usually was the biggest poultry show in the world. Of course, now it has included all other animals in the last few years. So it is not exclusively poultry anymore. But still, I think they have 32,000 visitors as the highest. And for sure, Poultry India has absolutely beaten that. I think if only if we can get a better way to record how many people come, because we know it's close to 45,000 now. And it is interesting that many people from farmers from Africa and all that are now choosing to come to India, because it makes more sense to come to India for them for what they want to do than going to the Atlanta show or even to the Bangkok show. So I think that is my request again to the Indian media to please highlight, because it's something that we have achieved and we are proud of, and I think it is that something. I think it would be great if you can also project that and let the country know what is happening. A few things I wanted to just highlight. It's been 60 years since Srinivasa has been started by my father. And I was just doing a little bit of calculation on what is the impact that the Indian poultry industry has done. So as per, so an egg used to sell for 20 paisa in 1970. Today on an average it is 6 rupees. Sometimes more, sometimes less, but generally it is 6 rupees. We all have to be very proud of the service we are doing to the nation. India is now number 2 egg producer in the world. Number 3 is US. We will be adding a United States every 6-7 years. And just imagine the service it is doing to the children, to women, and all that in providing quality nutrition. And I also wanted to give you one small point. One egg equivalent, if you want to have milk, you need 185 ml, which will cost you about 12 rupees. Right? And if you actually calculate dal on the basis of digestibility and the value, then dal is costing you 16 rupees, equivalent to one egg. So there's nothing better, and that is what this is. And why am I saying this is, come to Poultry India and you will see, what anybody wants to do anything in poultry, because poultry is going to expand 4 to 5 times in the next 22 years, as India is marching towards Viksit Bharat. And so within that, huge opportunities for everyone. And especially, I would say in UP and Bihar will be the future of poultry. And I think for them to learn what to do, I think you have to come, because say exhibitions happen around the country, but nothing of the scale. The scale in Hyderabad is global, believe me. So there is nothing there, so that they can't repeat anywhere else, because investing that much money and doing it and is not going to be easy. I would say it's going to be pretty impossible to compete against Poultry India now, because that scale is very, very difficult. Like Srinivasa more or less only participates in Poultry India. We don't participate anywhere else, almost. So I think with those few words, once again, I wish the media friends to please highlight and promote, because this is what I think everybody needs to know more about. Thank you very much for the opportunity. हमारे साथ इंडिया के कई एसोसिएशंस, जैसा मिस्टर गुलाटी साहब जो चेयरमैन हैं क्लेफमा के, वो हमारे साथ हैं. वेट VIP से जो आए हैं, संतोष जी सेक्रेटरी साहब आईएसओ है, नवीन साहब जो आईएसओ है, जो हमारे ब्रीडर एसोसिएशन, नॉट ब्रीडर एसोसिएशन के हैं. एंड देन नवीन पशुपति साहब कर्नाटका पोल्ट्री ब्रीडर फार्मर एसोसिएशन से है. अली साहब जो हमारे उत्तर प्रदेश पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन से है. तो आप देख सकते हैं कि हम लोग सब एक लोग हैं, एकजुट बन के काम करते हैं. हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने छोटा प्रयास किया है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर. तो इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको, मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, और ये पोल्ट्री इंडिया हमें आगे आप और ऊंचाइयों पे लेके जाने का मौका दीजिए. ये पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्रेस हमारा साथ दे, और देश के उन्नति के लिए हमें आप लोग साथ दें. ये हमारे प्रधानमंत्री का भी सपना है, वो हम सपना पूरा करेंगे. हर आदमी, हर देशवासी अपने ये मोदी जी के सपने को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के सपने को आगे लेके जाने का प्रयास करना है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इज़ व्हाट वी वांट एक्चुअली. सो इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलने का आई डोंट थिंक आई रिक्वायर मच. थैंक यू once and all for coming to Poultry India, and thank you my poultry press, all of you who have come for this
जर्नी ऑफ पोल्ट्री, आपके बगैर ये काम नहीं हुआ होता। पोल्ट्री प्रेस हमारे साथ हर वक्त था, हमारे हर संकट के लिए सामने खड़ा है, और हम उनके ऊपर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं हो, और ये पूरा डेडिकेट हम आपको ही करते हैं। हमारा जो सक्सेस है वो आपके थ्रू ही होता है। थैंक यू वंस अगेन। Good morning, dignitaries on the dais, off the dais, media partners, all the associations, those who have come over here. Indeed, the president of IPMR, he has given a beautiful narration about how we have evolved from a very small show to a world-class show as on date. And this year we are going to have our 17th edition of Poultry India. सुरेश चित्तूरी साहब ने बहुत अच्छे से बताया what is the importance of this particular sector in our country. Since media persons are here, I would like to emphasize how this poultry has been evolved since independence. Of course, we are talking about the green revolution, the white revolution, but never talked about poultry revolution, which is much more than these two revolutions. Almost 70-fold increase in production in this country. And as on date, we are second in ranking, world ranking, so far egg production is concerned. जर्नी रही है 2 बिलियन अंडे से लेकर के 142 बिलियन अंडे तक की। सबका समग्र विकास रहा है, सबका साथ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खासकर इस एक्सपो की, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, सीइंग इज बिलीविंग। एक्सपो इज अ प्लेस वेयर यू कैन गो, यू कैन सी एंड यू कैन बिलीव हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग। हियर all requirements, whatever is there in your mind, you'll find in the expo. एक्सपो की शुरुआत में थोड़ा सा हम लोगों ने नॉलेज के एक्सचेंज के लिए एक टेक्निकल सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे, और टेक्निकल सेमिनार में विचारों का आदान प्रदान होता था, विचार विमर्श होता था, कुछ करंट इश्यूज को लेकर के, समस्याओं को लेकर के उनका समाधान ढूंढने का प्रयास होता था। धीरे धीरे इसने भी अपना स्वरूप बदला, और 2012-13 से इसको हमने रीडेजिग्नेट किया एज नॉलेज डे। नॉलेज डे वेयर वी गेट अ स्पार्क अबाउट व्हाट वी वांट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी कैन गेट इट सॉल्व। अब एज ऑन डेट नॉलेज डे हमारा जो एक्सपो है उसके एक दिन पहले होता है। इस साल ये 25 नवंबर को है। नॉलेज डे को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बना दिया गया है, और इस नॉलेज डे में हम नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं। सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री में हम इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि इंडस्ट्री की, फार्मर्स की, सेक्टर की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उसके साथ उनकी क्या समस्याएं हैं। अब इस डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करते हैं जिसमें लोग अपने अपने ओपिनियन, उनकी क्या समस्याएं हैं, किस बारे में वो इस वर्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारियां इकट्ठे करते हैं। उसके बाद हमारी एक नॉलेज डे कमेटी है जिसके करंटली 6 मेंबर हैं और 7वां मैं हूं। फिर ये कमेटी मिलकर के बैठती है, उन चीज़ों की शॉर्ट लिस्टिंग करती है डिपेंडिंग ऑन मेरिट्स, कितने लोगों ने किस चीज़ को वोट किया और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें ज्वलन समस्याएं हैं जिनके बारे में लोग सुनना चाहते हैं, और फिर उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट स्पीकर्स कौन होंगे। दैट वी आर ट्राइंग टू गेट इट वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इन इंडिया, वी आर ट्राइंग टू गेट द स्पीकर्स वर्ल्ड ओवर। इस वर्ष जो मुख्य बिंदु नॉलेज डे समिति के संज्ञान में आए, उसमें हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा जिस समस्या से ग्रस्त है वो है एवियन इन्फ्लुएंजा। टाइम एंड अगेन
सरकार से भी बात होती रही है, इंडस्ट्री की बात होती रही है, फार्मर्स की समस्याओं पे चर्चा होती रही है। पर शुरुआत में जब हमें लगा था कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा 2006 में भारत में आया था, तब हम लोग स्टैंपिंग आउट पॉलिसी से इसको समाप्त कर देंगे, और पहले 2-3 साल में इसका कंट्रोल भी अच्छा हुआ। पर अब कुछ ज्वलन समस्याएं उसके साथ भी जुड़ गई हैं, जिन्होंने इस बीमारी के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया। उन कारणों से अब ये भी कहा जा सकता है कि शायद स्टैंपिंग आउट अब हमारे लिए वे आउट नहीं रह गया है। इसलिए लोगों ने ऑल्टरनेट मेथड्स पे सोचना शुरू किया। क्या वैक्सीन को हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, क्या उन चीज़ों से बाकी के बायोसिक्योरिटी के कॉम्बिनेशन के साथ, वैक्सीन के कॉम्बिनेशन के साथ इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। क्या वैक्सीन कारगर होगी, क्योंकि वायरस हमेशा अपना नेचर बदलता रहता है, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बनते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे अब इस वर्ष हमारी इंडस्ट्री इच्छुक थी इन विषयों पे चर्चा की जाए। हमने इस वर्ष इसको एक विषय के रूप में लिया है, और जिसके लिए इंटरनेशनल स्पीकर्स को हमने इनवाइट किया है। दूसरी सबसे ज्वलन समस्या जो हमारे सेक्टर की, जो सेक्टर वालों ने आइडेंटिफाई की है, वो जीएम क्रॉप को लेकर के है। मेज का और सोया का जो स्कैरिसिटी है, अनअवेलेबिलिटी फॉर पोल्ट्री फीड है, और ऑल्टरनेट यूज इन अल्कोहल प्रोडक्शन है। उसके कारण आने वाले समय में इन दो फीड इंग्रेडिएंट की समस्याएं हमारे देश में खासकर पोल्ट्री सेक्टर को होना स्वाभाविक है, और उस पर चिंतन, विचार, विमर्श, मनन ये प्रारंभ किया गया है। तो इस विषय को भी हमने इस साल नॉलेज डे में एक विषय के रूप में लिया है कि जीएम क्रॉप हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, जो एग्जिस्टिंग मेज है उसका जो प्रोडक्टिविटी है, या जो सीड का अवेलेबिलिटी है, या जो क्वालिटी सीड का अवेलेबिलिटी है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस बिंदु पर भी हम इस बार जो नॉलेज डे है 25 को, उस पर विचार विमर्श करेंगे। जो तीसरी ज्वलन समस्या जो हमारे सेक्टर ने हम लोगों के सामने रखी थी नॉलेज डे कमेटी के सामने, वो थी मार्केटिंग फ्लैक्चुएशंस। हमेशा अप्स एंड डाउन पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट के साथ लगे रहते हैं। तो कोशिश ये है, और सजेशंस भी आए थे, कि क्या हम अपने रूरल मार्केटिंग सिस्टम को टैप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया रहा है। तो इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि एग के लिए और चिकन के लिए क्या हम अपने जो ग्रामीण अंचल हैं, जो ग्रामीण परिवेश है, जो ग्रामीण मार्केटिंग व्यवस्था है, विपणन व्यवस्था है, क्या उसका सहारा लेकर के इसका पेनिट्रेशन हम डाल सकते हैं। कोशिश ये भी रहेगी कि जैसे आप देखते हैं कि डेयरी के क्षेत्र में अगर डेयरी का प्रोडक्ट है तो वो गांव में भी अवेलेबल है, पर अभी अगर इंटीग्रेटेड मॉडल्स को छोड़ दें तो जो रूरल एरिया है उस पर अभी भी एग का और चिकन का अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, और सिर्फ लोकल जो प्रोड्यूस होता है वही वहाँ तक पहुँच पाता है। इसको भी इस बार हमने एक विषय के रूप में लिया है। और एक जो महत्वपूर्ण विषय था वो था कि जो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन है उसको कैसे, उसकी डायनेमिक्स को समझा जाए और उसको बेहतर उपयोग के लिए और आगे आने वाले समय में उसको समयोपरक बनाया जाए, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नॉलेज डे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होने वाला है, और इस हर वर्ष की तरह हम लोग इस बार भी एक मोटिवेशनल स्पीकर को नॉलेज डे टीम में इनवाइट कर रहे हैं। वो मैं सीक्रेट रखना चाहूँगा, क्योंकि इट शुड बी सरप्राइज टू ऑल, बिकॉज उसमें हम लोगों ने हर वर्ष एक नए नए व्यक्तियों का, व्यक्ति विशेषों का चयन किया है और वो आप लोगों के समक्ष रखा है। तो इस वर्ष भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति को आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। की नोट स्पीकर हमारे पास होंगे जो विकसित भारत में जो मुर्गी पालन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सम्यक विषयों का एक बहुत अच्छा संगम रखा है इस नॉलेज डे के लिए, और जिसको सजाने संवारने का कार्य अभी भी चालू है, और बहुत अच्छे तरीके से हम आपके सामने इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। और आने वाले समय में ये जो हम लोगों का प्रयास है जारी रहेगा, और इस बार आपको इन विषयों पे बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी आयोजित करते हैं, और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में जो हमारे वक्तागण आते हैं उनसे अगर आपकी कोई बातचीत आप करना चाहते हैं, आप अपने प्रश्न उनके समक्ष रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको पूरा पूरा मौका मिलता है।
यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात का और उल्लेख करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक पोल्ट्री सेक्टर ही है जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट सेक्शन है, और वो आप लोगों का एक एसोसिएशन भी है, इंडियन पोल्ट्री जर्नलिस्ट एसोसिएशन। सब लोगों को अगर मैं ये बताना चाहूँ कि पूरे हमारा एनिमल एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में अगर किसी के पास कोई इतना सशक्तिकरण के साथ है कि जिसके पास उसका अपना खुद का मीडिया है, तो वो सिर्फ एक पोल्ट्री सेक्टर ही है। तो उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने अपने प्रयासों से इस सेक्टर को एक नई दिशा एवं दशा दी है। इस काम को आप आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। और आप सभी लोगों का नॉलेज डे में और हमारे जो पोल्ट्री एक्सपो है 2025 17 एडिशन, इसमें आप सभी का स्वागत है। कोशिश कीजिए आप वहां आकर के इस शो को स्वयं देखें और स्वयं चर्चा करें, स्वयं इससे अभिभूत हों, और उसके बाद फिर आप इसका प्रचार प्रसार आने वाले समय में और करते रहें। पुनः इसी आशा के साथ कि आप सभी लोगों का साथ हमें हर स्तर पर मिलता रहेगा, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Padma Shri Rao Gar PV Rao Sahab is from Hyderabad, Sheikh Imam Sahab, Harban Singh ji. So a lot of eminent personalities from poultry have come from Hyderabad, and we have close to 120 breeders in Hyderabad, and about 4 to 5 hatcheries are already into processing of poultry, and they are able to supply chilled and frozen chicken in Hyderabad. And Telangana has been pioneering. They have been doing pioneering work in Indian poultry and giving a lot of eminent personalities in poultry like Dr. Ram Subbareddy, PV Rao Sahab. A lot of scientists have come from this university who have done before and who have been doing good work for the industry. We have close to 3 veterinary colleges in Telangana, one in Hyderabad, Warangal and Korutla. And we produce almost 650 veterinarians every year. And there have been earlier days during our times in 80s, not many people were coming into industry. But now that almost 20% of the students come to private sector. And talking about the poultry industry, I mean Poultry India that has been organized in Hyderabad, IBEMA, conducted by IBEMA. We are proud to host this great show in Hyderabad. This is the largest and best show in Hyderabad being conducted. And not only from India, Asia and world over we get visitors. As Suresh Raidu sir just now said, everybody's dream is to see Atlanta show. I was visited Atlanta show 2004, 21 years back, and we thought that's the best. And this year again in 25 I visited after 21 years gap just to see. We have been claiming that everybody's saying that Hyderabad is the best. We wanted to see that. And we went all the way to US. The weather challenges are so many during that time in January. Besides that, we need to pay entry fee of close to 12,000 rupees to enter the show. And what we have already seen is that besides poultry, there are other animals, or the ducks and other species also are included. And what is relevant to us is not much there. Definitely there are good things to learn, but compared to Hyderabad, there are so many things which are not directly applicable to us. So Hyderabad show is the best. And coming to the contributions of our Indian Poultry Show that is conducted by IPEMA, it is 100% non-profit organization. As a veterinarian, I'm telling this, and more so for the poultry people, it is very good for the veterinarians also to get that exposure and the lot of new opportunities coming for the veterinarians by attending this expo. The Knowledge Day, which I myself was a speaker some time back, so it's a great platform for the people to exchange their ideas, for networking and learning new things in poultry. Coming to the World Egg Day that we conduct every second Friday of every October in Hyderabad and all over India. VIP also has been doing a great work in this, and our Poultry India is supporting us in encouraging these World Egg Day programs all over India. And one such program we are now doing in Hyderabad, in Telangana state, in 3 veterinary colleges. All the 600 students are going to participate in this competition, because these veterinarians are the future for the poultry industry. These 600 people are going to work all over India or different places of our Telugu states.
So once they understand the nutritive values of eggs and chicken, as the media should, people also should know that uh, the nutritive values of egg and chicken are not very well known to the consumer. The responsibility also lies on us, and we have taken it as a utmost important thing today. And we are going to continue to work on this, educating our consumers about the nutritive value of eggs and chicken. And for this World Egg Day program, we made a special effort also to have the students' competitions to prepare posters or the some kind of reels which students are going to make, they themselves are going to make, which are going to be very interesting and easy to understand for the consumers. Like Sunday or Monday, Rose Cow Monday has become so popular. It was selected as one of the best ads in India also. So similarly, we were encouraging the youngsters, the new generations, to use the social media and to make some good ads for the promotion of egg and chicken, which we will be doing next month. Thank you. I now request Mr. Naveen Pashupati from Karnataka to speak few words. Morning to all the dignitaries on the dais and off the dais. Um, this is a large trade show, and it's a great initiative, and 17th year, and I saw the curtain raiser on I would say it's a teaser document. What they do when Kantara wants to get released, they release a teaser document. And I said, this is like on Kantara teaser document. And Uday just laughs on the WhatsApp message. Anyway, it's a great show. For us, I come from Karnataka, and I represent the Karnataka Poultry Farmers and Breeders Associations. We're not as big as Hyderabad and AP and Telangana in terms of membership. We are about 85 members, and each member is a large operator in the state. And for us from Karnataka, it's like a picnic to go to this trade show. Really like a picnic. We send all of our sales representatives, we send all of our management team to go and interact with the other people in the sector, to go and see what technology is available in feed manufacturing, in transportation, logistics, Internet of Things, and also interact. It's a socializing platform for people from our sector, networking platform. I think a lot of things can happen. And one of the things that also happens is all association leadership team also comes to one place, and they stand across the coffee table, lunch table, dinner table. They discuss about the most important things and they reach certain conclusions. I will not get too much into the statistical data of poultry. I always want to use a word called we are animal agriculture. We really are animal agriculture. One thing I would like to make a request on this platform through the media to the Government of India is, of late, when Government of India is negotiating the trade deals with other countries, they are only mentioning about machwari, which is your fish farming, and they only mention about dairy. They never mention about poultry as a word. And it saddens me as a sector, because the poultry of the all animal agriculture, I stand to be corrected, is the fastest growing animal agriculture. And the cost of protein per gram in poultry is most competitive compared to aqua, lamb, mutton, and beef and pork. So we are really doing economies of scale, technology, innovations. ERP packages are rolled out in so many companies. Massive investments are happening in information technology, software, hardware. So I request the government to please put in a word called poultry whenever you talk about fisheries and dairy. And that is one request I would like to make on this platform. The second request I would like to make is, it's a great initiative by Mr. Duma sir and Uday sir and the team organizing. I said, why are they doing this curtain raiser in Delhi? What's the intention? And then during interaction, he said, I think I spoke to ma'am also there. She said, we want antenna. We want eyeballs. So if you really want eyeballs,
of the government of India, I am of the suggestion that it's a great initiative. Please continue doing the curtain raiser in Delhi. But our sector, animal, poultry, agriculture sector, we have import-export of vitamins. So we have connections and transactions with Ministry of Commerce. Secondly, we also do a lot of import-export of raw materials depending on the supply demand in the sector. So we need to work with Ministry of Agriculture and obviously our mother industry. So the next year, my feeling is a great initiative to make this, to increase the antenna of our sector and visibility of this sector and size of this sector. Maybe joint secretaries or secretaries of 3 of these ministries should be there, because I don't know if Ministry of Agriculture knows how big we are. I don't know if Ministry of Commerce knows how important we are in generating rural employment. And many of our raw materials in poultry, we pay GST. The end product has no GST. So we are actually contributing to the exchequer of the government. We are not taking a credit. Your vaccines, your animal health products, your soy, so many things we are doing. Now, insurance, many of the poultry companies are taking to their employees, though GST on personal insurance is exempted in the recent, but group insurance is not exempted. So still we pay 18% on group insurance and healthcare benefits that we extend to all the ground crew working in all the poultry companies. That's a contribution to the exchequer. So I don't think government knows how we are impacting digital India. See, prior to demonetization, I was telling Mr. Anil Dhumal sir, when we were talking, we all grew up in poultry. People used to come to our office with belts around the waist. They used to open the belt and the cash used to drop on the table. And that's how the transactions were happening in trade. Cash transactions. People used to pay in cash and we used to remit to the bank. Post-demonetization, the poultry sector has brought all the traders across India, 90% of the traders are compliant with digitization. They have got bank accounts, they have got KYC. So we are really, really making things happen. Having a policy on theory in Delhi is one part. Execution, making it happen, is another part. The sector has really brought in tremendous financial discipline amongst the poultry farming community, amongst the breeders, hatcheries, feed plant, raw material suppliers, traders. Entire chain is getting digitized. The transactions are all NEFT, RTGS. Everything is monitored across the digital platform. So we are doing so much. I request the press to shout loudly and request government humbly, say, please increase poultry word when you talk about anything in the press. We are also part of animal agriculture, and we are a large part of animal agriculture compared to others. So with that, I wish the trade show all the best, and we will all be there. And I hope you cross 50,000 this time. Thank you. Good morning, everyone. Respected panel and the great audience and the reporters. Thanks, Dhumal sir and Uday sir, for giving this opportunity. I am Dr. Santosh Shire, representing VI Pivots in Poultry, globally one of largest veterinarian platform working in the poultry, more than 1600 veterinarians altogether. So under the leadership of our beloved President Dr. Ajay Deshpande sir, we are growing, and as a technocrat we are doing our role, as like each of the association is doing their role based to contribute to the poultry. Back to Poultry India, I must say, being in India, we should have one nation, one show. And thanks for this theme to the respected dignitaries keeping this theme for the Poultry India. Why Poultry India? Before starting, I just take 2 minutes. For anything, what we believe to the common man is a perception, and this perception or narrative is set by the you guys, the media, the important media, either it may be press media, electronic media, print media, everything.
So till now, the Western world is setting the narrative through their agendas and pushing us on the world. But now it's the time for the India, the new Bharat. If the Silicon Valley is set by the Indians, why it not be done into the India? Just like that, we humbly request the media to give importance to the Poultry India, this show, and why it is important in India. I just highlight few of the facts which everyone knows. We are the globally second largest in egg production, fourth in a chicken, and the most important, we are 40 billion mouths to feed. Proudly, we are the least per gram protein cost India. So affordability is more important, and that we are giving. Approximately 17 to 20% of our children, they are underweight of the standards, and for that poultry is important in terms of the chicken and eggs. We are providing that. Indian poultry is scientifically growing at the rate of 8 to 10%. So this is a 2.5 lakh crores of the sector which contributing majorly to our agribusiness as a processing industry. So poultry consumes the 70% to 80% of the maize and 40 to 50% of the soya produced by our farmers. So all this together come under one platform, that is Poultry India. And you guys all are invited to visit Poultry India, realize what is a Indian poultry, how we are growing scientifically. It is the largest show in Southeast Asia, I would say. So the press has an important role to set the narrative, and it's time to show the strength of the Indian poultry through your eyes, through your talent, and through your pain. So really humbly request through all press media and all respective experts and the peoples from the government or any sector to visit the Poultry India show and make it another grand success. Thank you very much for giving this opportunity, and sir, this time we'll set a record for sure. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. तो यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को और मेरे प्यारे मीडिया साथियों सबको मेरा नमस्कार। साथियों, आप सबको पता ही है, किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए हमें उसमें टाइम पर सुधार करने पड़ते हैं, नए उपकरण टेक्नोलॉजी को योग में लाना पड़ता है, और यदि हम टाइम के हिसाब से उसमें चेंज नहीं कर पाए तो हम शायद आज के कंपटीशन के युग में कामयाब नहीं होंगे। तो हमें जो ये पोल्ट्री इंडिया एक्सपो है, इन सब की पूर्ति हमारी वहीं से हो जाती है, क्योंकि यह इंडिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री का जो व्यापार मेला है, और इसमें हमें नई जो उपकरण है, टेक्नोलॉजी है, वैक्सीन है, मेडिसिन है, सब देखने को मिलता है। और मेरी तो ये सोच है, जब भी इस तरह का कोई पोल्ट्री एक्सपो या मेला या कोई भी बड़ी मीटिंग हो तो हमें उसे एक फेस्टिवल की तरह मनाना चाहिए और हम सबको उसमें जाना चाहिए, ताकि हमें एक दूसरे का जो पता लग सके भाई क्या क्या दिक्कतें आने वाली है और क्या क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं। टाइम से पहले हमें सब वहां से मालूम हो जाता है। और अपना इंडिया देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन हमारी पोल्ट्री की एक ही लैंग्वेज है कि हम कैसे कम से कम खर्चे में अपने मुर्गियों को या अपने जो प्रोटीन है उसको तैयार कर सके और एक बेस्ट से बेस्ट प्रोटीन तैयार करके कम खर्चे में वो अपने जो समाज को उसको प्रदान कर सके, ताकि हमारा एक स्वस्थ समाज का योगदान हो सके और हम उसमें थोड़ी हेल्प कर सके। तो मेरी लास्ट में यही रिक्वेस्ट है साथियों, जहां तक आप मीडिया की बात जाती है, हर व्यक्ति को, हर पोल्ट्री से जुड़े व्यक्ति को इसके बारे में बताना चाहिए कि यह पोल्ट्री एक्सपो है, कोई आम चीज नहीं है। इसमें हमें नई उपकरण, नई मशीनें, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी और साथ के साथ जो हमारे पोल्ट्री में, हमारे मुर्गी में या अपने ब्रीडिंग फार्म में कोई भी जो दिक्कत आ रही है, किसी भी बीमारी की, किसी भी कुछ चीज की, वहाँ अच्छी से अच्छी कंपनी आती है, अपने विचार वहां रखने चाहिए और अपने विचार रखकर अपने बिजनेस में सुधार करना चाहिए। तभी हम आज के कंपटीशन के युग में आगे बढ़ सकते हैं और टिके रह सकते हैं। किसी भी
बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना तो आसान काम है, लेकिन उसको वहां तक बनाए रखना वो सबसे कठिन कार्य है। उसके लिए हमें अपने बिजनेस में सुधार करने पड़ते हैं। इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं सभी साथियों को वहां जरूर पहुंचे। धन्यवाद। Mr. Nawab Ali is from UP, President UP Poultry Farmers Association. हमारे सब साथी मंच पे बैठे हुए सम्मानित सदस्य, हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जैसा कि अभी सब लोगों को सुन रहे थे हम लोग, बहुत सी बातें आप लोगों ने सुनी, नई बातें। हमारे शुक्ला जी ने नॉलेज डे के बारे में बताया, जो कि बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, जो भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे नवीन जी ने बहुत अच्छे सजेशंस दिए, आप लोगों ने सब सुने, बहुत ही अच्छा लगा उनकी बातों को सुन के। हम लोग यूपी उत्तर प्रदेश पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे अभी बहुत गुंजाइश है पोल्ट्री की, और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है। इंटरेस्ट सब्सिडी है, 30,000 बर्ड के यूनिट लगाने पे करीब 40 लाख रुपए की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। अभी हम लोग जो जितनी यूपी में ज़रूरत है अंडे की, उसका मेरे ख्याल से 50-60% ही हम लोग वहाँ कर रहे हैं, बाकी सब दूसरी जगह से आता है। बाकी पोल्ट्री इंडिया जिस तरह से काम कर रहा है, हम लोग हमेशा उनके साथ जुड़े हैं, और हमें कहते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि हमें वहाँ पोल्ट्री इंडिया का जो प्रेसिडेंट मिला है, एक स्मार्ट और हैंडसम और नॉलेज डे से लेकर सब तक वहाँ मौजूद रहेंगे। अपने और साथियों के साथ भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।